Hello everyone, so welcome back to my channel. And today we having ethical hacking course and week 1 assignment 1. I will give you the solutions of whole assignment. So first question is, which of the following belongs to the CIA traits in information security? So the solution is first option A, C and E. CIA trait confidentiality, availability एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग penetration testing models provides the tester with no prior information about the target network. So the solution is black box model B. Then which of the following statement is true for packet switch network? So the for the packet switch network, the correct will be third third का B. मल्टीपल कनेक्शन शेयर द सेम कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, पहले आप बी सिलेक्ट कर लेना क्योंकि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप. देन ई, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स बिफोर ट्रांसमिशन. बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. ठीक है, बैंडविड्थ डेडिकेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन नहीं होता है. और डिले इज ऑलवेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ नेटवर्क लोड, ये भी नहीं होता. डिले हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है नेटवर्क लोड पे. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. डेटा ये वाला ट्रू है. इट गारंटी जीरो पैकेट लॉस अंडर ऑल कंडीशन, तो ये भी फॉल्स. ठीक है, तो जो ट्रू ट्रू है मैंने सारे बता दिए. देन बीई हो गया. देन फोर्थ पर आ जाओ. Which OSI layer is primarily responsible for farming, MAC addressing, and error detection over a physical link? So the fourth answer is B, data link layer. B. Then we having fifth question, and 1500 byte packet is sent over the 100 kilobyte point to point link whose propagation delay is 8 millisecond. The packet will reach the destination after dash millisecond. So assume 1k equals to 1000. So the answer will be 128. Then sixth question, what is the primary purpose of an IP address in a network? So the solution is B. It uniquely identifies a host or interface on a network. Then seventh question, dash is the minimum size in bytes of a TCP transmission header without option. So answer is 20. 20. Then eighth question, which IP header field decremented at every router hop and is primarily used to prevent packets from looping indefinitely in a network? So the answer is time to live TTL. Then ninth, ये भी fill in the blanks है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है 7. इफ द आईपी हेडर इज, इसे सॉल्व करना है. ठीक है, आईपी हेडर अगर हमारा बिट्स 224 बिट्स लॉन्ग है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द HLN फील्ड, LN फील्ड. 10th क्वेश्चन है, बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ मैक एड्रेस. तो 48 बिट्स यूज होते हैं. ठीक है, ये सारे हमारे सॉल्यूशंस थे. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज hit the like button and subscribe the channel. Thank you for watching this video, and we continue on our channel, so please subscribe the channel. And for the further weeks, week 2, second, third, fourth, fifth,
I will provide you whole solutions. So please like and subscribe the channel. Thank you.